Afternoon, everyone. I'm Dr. Poornima Mathur from Oasis Fertility, Vadodara. So आज हम बात करने जा रहे हैं on a topic which is very sensitive, like miscarriage. हम सब ने सुना होगा, but we feel we do not share it. It brings with itself a lot of sorrow and grief. What if we had to endure that pain again and again? So we are going to talk about repeated miscarriages. What is the line of treatment? Where, how can we correct it? And what are the options available? So facing repeated miscarriages, here's what we need to know. So recurrent pregnancy loss, जो हम miscarriage कहते हैं, हम उसको कहते किसको है? अगर हमारा spontaneously मतलब अपने आप ही बिना हमारे कोई intervention किए हमारा बेबी without reaching the age of viability, that is viability is वो age जब baby can survive on its own, अगर वो वहां तक पहुंचने से पहले फॉर सम रीजन अबॉर्ट हो जाता है, उसकी हार्ट बीट हम उसे लूज कर देते हैं, हार्ट बीट नहीं होती है, दैट इज नोन एज अ मिसकैरेज या प्रेगनेंसी लॉस. अगर किसी को दो स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी लॉसेस हुए हैं, whether consecutive or non consecutive, it is known as a recurrent pregnancy loss. मतलब हमें बार बार हो रहा है, मतलब इसको आगे होने के चांसेस थोड़े से और बढ़ जाते हैं. इट इज टाइम दैट वी टेक अटेंशन टुवर्ड्स इट, हम उसको इवेल्युएट करें एंड उसके लिए नेसेसरी ट्रीटमेंट करें. दी इंसिडेंस अगर हम कहें 100 में से 2 से 5 प्रेगनेंसीज जो लोग होते हैं वो सफ़र करते हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस से. सो ये जो हमारा रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, व्हाई डू वी हैव इट. कुछ होते हैं जेनेटिक कारण कि भाई हमारे अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो रही है, हमारे जो बीज बन रहा है उसमें जेनेटिक कॉज है जिसकी वजह से मेरे जो भ्रूण, मेरा जो गर्भ है, मेरा जो एम्ब्रियो है उसमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो आगे ग्रो कर पाए. ट्रांसलोकेशंस, हम इन सब की डिटेल में थोड़ा सा आगे जाते हैं. एनाटॉमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, हार्मोनल फैक्टर्स हो सकते हैं. हम हमेशा सोचते हैं क्या हमारे यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, पार्टनर की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमारा ये रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कॉज कर सकता है. हमारी इम्यूनिटी की, हमारे लाइफस्टाइल की रीजंस, अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. जब नाउ अगर हम इवेल्युएट करें, अगर हम देखें कि ये जो अबॉर्शन हो रहा है, बार बार हो रहा है, उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसमें से एक पहला हमारे दिमाग में आता है एनाटॉमिकल फैक्टर. एनाटॉमिकल फैक्टर कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है हमारे यूट्रस में, हमारे गर्भाशय में कि वो होल्ड नहीं कर पा रहा है प्रेगनेंसी. तो कई बार हमारे यूट्रस के अंदर एक पतली सी, आपने कभी सुना होगा सेप्टम, या हिंदी में लोग कहते हैं झिल्ली और परत है, पर्दा है. वो सेप्टम जो है बेबी को एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं लेने देता या वो प्रेगनेंसी को हमारे प्रोग्रेस नहीं करने देता. एट टाइम्स हमारे यूट्रस का पोटेंशियल टू होल्ड द बेबी, दैट इज हमारा यूट्रस जो है वो वीक है उसका मुंह, एंड वो हमारे बेबी को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता. तो हमारे 3rd-4th मंथ होते ही हमें पेन होते हैं एंड बेबी अपने आप निकल जाता है बाहर. इसे कहते हैं सर्वाइकल इनसफिशिएंसी. ये हमारा बार बार प्रेगनेंसी लॉस करा सकता है. जो हम कह रहे थे जेनेटिक फैक्टर, अब जेनेटिक फैक्टर में अगर हम देखें तो हो सकता है जो पेरेंट्स हैं, मदर फादर, उनकी अगर हम जेनेटिक टेस्ट कराते हैं तो उसमें थोड़े से, अगर हर इंडिविजुअल में आप देखो तो वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, टोटल 46 हमारे जो है हमारे. अगर हमारा 46 क्रोमोसोम्स हमारे ठीक है तो यू आर नॉर्मल. कभी कभी उन क्रोमोसोम्स में थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल इधर से उधर शिफ्ट हो जाता है या कोई नंबर आगे पीछे है, जो हमारी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं जिससे हमारे फीटस के ऊपर असर पड़ता है. नाउ अगर पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स में बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड ट्रांसलोकेशंस हैं, उनमें हमारे चांसेस ऑफ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हाई है. अगर हम वो प्रेगनेंसीज जो हमारी अबॉर्ट हो जाती हैं, अगर हम उनका जेनेटिक स्टडी करें तो हमें उनमें पता चलती है कि उनमें भी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं. जैसे उनमें नंबर जो है, हमारा जितना सेट नंबर है उससे नंबर ज़्यादा हो जाना या नंबर कम हो जाना, ये सारे क्रोमोसोमल फैक्टर्स हो सकते हैं. हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए हार्मोन्स काम करते हैं. दे ऑल वर्क टुगेदर इन सिंक्रोनी सो दैट वी हैव अ हेल्दी बॉडी. नाउ देयर सर्टेन हार्मोन्स जिनके लेवल्स अगर डिरेंज्ड होते हैं, दे कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट आवर फर्टिलिटी एस्पेक्ट. इनमें से 2 मेजर हार्मोन्स हैं हमारे, द थायराइड हार्मोन्स एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन्स. अगर हमारे प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई होते हैं, वो हमारी एचपीओ एक्सिस को ऑल्टर करते हैं, वो हमें इनफर्टिलिटी को लीड करते हैं एंड कैन इवन लीड टू रिकरेंट हमारे अबॉर्शंस. थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म जो है वो सबसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज है हमारे रिकरेंट मिसकैरेज का. इन सब में हम मेल्स हमारे हमेशा इग्नोर होते हैं, इवैल्यूएशन के लिए भी एंड इम्पैक्ट के लिए भी. जितना हम सोचते हैं एक अबॉर्शन एक लेडी को अफेक्ट करता है साइकोलॉजिकली,
उतना ही एक मेल पार्टनर undergoes through it. So, and that is something that we need to evaluate, the stress element in the male factor. एज, एज अफेक्ट्स दोनों, मेल एंड फीमेल दोनों को, बट मेल्स में अगर एज हमारी ज़्यादा है, अगर हमारी स्मोकिंग की हैबिट है, अगर अल्कोहल कंजम्पशन हमारा ज़्यादा है, या हमारा वेट ज़्यादा है, इन सब से हमारे स्पर्म्स की क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है, डीएनए डैमेज इंक्रीज होता है एंड इट कैन लीड टू रिकरेंट मिसकैरेजेस. तो ये हमारा डीएनए डैमेज इवैल्यूएट करने के लिए वी हैव अ डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स, जिसको हम इवैल्यूएट करके देख सकते हैं कि हमारे स्पर्म्स का स्टेटस कैसा है. उसके अलावा हमारे इम्यूनिटी वाले फैक्टर्स होते हैं. कई बार हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है. देयर आर एप्ला सिंड्रोम होता है, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, जिसमें हमारे 8 to 9 वीक्स के आसपास हार्ट बीट का जाना, या फिर फुल टर्म आईयूडीज होना, या 24 वीक्स पे सडन बेबी का डेथ हो जाना, ये सब बड़ा कॉमन है. तो सिंपल ब्लड टेस्ट से इट कैन बी डायग्नोस्ड. इनहेरिटेड थ्रोम्बोफीलियाज है, जिससे हमारे ब्लड को क्लॉट होने की टेंडेंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है. ये फैक्टर्स भी हमारे रिकरेंट अबॉर्शंस में कंट्रीब्यूट करते हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द लेडी, लाइफस्टाइल जो है दैट हैज अ मेजर इम्पैक्ट. एज फॉर मेल्स, फीमेल्स के लिए भी इट होल्ड्स ट्रू कि द एज, वेट, अल्कोहल, स्ट्रेस, स्मोकिंग, इन सब का इफेक्ट पड़ेगा हमारे प्रेगनेंसी आउटकम पे. When we are talking about age, it is that we have to remember कि हमारी जो एज ग्रुप है 25 to 35 वाला एज ग्रुप, दैट इज सबसे आइडियल टू हैव अ प्रेगनेंसी. ये प्रेगनेंसी एज ग्रुप है जिसमें हमारे प्रेगनेंसी लॉस के हमारे इंसिडेंस भी थोड़े से कम है. Now when you see these same features in a 40-year-old lady, after the age of 40, the chances of abortion significantly increase. But do we like ये सब evaluation, इतने सारे factors हैं, how do we move closer to it? Like how do we get, हमारा ultimate goal is getting a healthy baby at the end of 9 months. So it is, you have to keep moving, go to a fertility specialist, आप अपना evaluation कराओ. We'll have a few investigations to find out हमारा क्या cause है, and then we have different modalities of treatment for you. So management में अगर हम देखें तो सबसे पहले important आता है एक history. So that we can know कि आपको कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स आपकी लाइफस्टाइल में प्रेजेंट है, जिनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं. वी कैन रिड्यूस दोज रिस्क फैक्टर्स भी सिग्निफिकेंटली, उस चीज़ के ऊपर काम करें. जो नहीं मॉडिफाइबल फैक्टर्स नहीं है, हाउ डू वी मैनेज देम, हाउ डू वी टैकल देम. सो नाउ एज हमने डिस्कस किया, अगर हम रिस्क फैक्टर्स देखते हैं, नाउ इफ वी नो दिस समबडी हु कम्स टू मी प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी एट द एज ऑफ 40 और समबडी हु इज कंसीव्ड एट द एज ऑफ 39-40, तो आई नो कि उनमें अगर प्रेगनेंसी लॉस के चांसेस हाई हैं, तो आई वुड बी ऑन अ वो like on a more aggressive treatment. Let's be more careful because I'm anticipating, because the risk factor is very high. After the age of 40, the chances of having an abortion would be significantly higher compared to an individual जो age group 26-27 में है and comes down to the first pregnancy. Now, occupational exposure. Now, if there have been various studies have been conducted to find out which exposure, which chemicals, which nutrients in deficiency or excess can actually lead to recurrent abortions. So, it has been found that अगर आपको heavy metals की poisoning हो, heavy metals का exposure हो, plus हमारे system में if we have a deficiency of micronutrients, ये सब हमें significantly push us towards recurrent pregnancy loss. So a little bit of evaluation of the occupational setting. What are the chemicals that we are exposed to? Smoking is strongly associated with adverse effects in pregnancy and neonatal outcomes. So it can lead to हमारे baby की growth retardation, placental abnormalities, low birth weight baby, and IUGR. And at the same time, it is also responsible for increased incidence of abortion. So it is strongly recommended if we are smoking, both the couple, the husband and the wife, अगर हमारे smoking है तो we should try to curtail smoking. अगर हमें frequent infections होते हैं, chronic endometritis है, तो that can also lead to recurrent abortions. We need a detailed genetic counseling. हम history देखें, if we have anything running in our families, हमें पता है we have our siblings who endured the same problem, or there is certain genetic disease that has been inherited in our family, और हमारी शादी consanguineous हुई है, मतलब the partner is somehow related to us,
This is where we need to have a genetic counseling so that we can find out, are we anticipating, and if we are anticipating, we get it evaluated further and we find a cure for it. Now, body mass index. Now, when we talk about, lot has been said about weight, obesity. Now, body mass index. Now, how we evaluate? Now, somebody comes up and says, "Ma'am, I'm 60 kgs. I'm 60 kgs." Like, how do you know? So it is like आपकी height के according आपका weight होता है, जो which is calculated with the help of BMI. Now, this is something which we use to evaluate कि आप fit कितने हो and your the prognosis. Now, increased body mass index. Now, we wanted somewhere around 18 to 25, maximum up to 30. Now, अगर हमारा body mass index is very low, that is if we are too underweight, या हमारा body mass index is significantly high, we are dealing with obesity, overweight or morbid obesity. इनमें हमारे chances of miscarriage are significantly increased. So it is strongly recommended that if we have been dealing with pregnancy issues, if we have been dealing with abortions, we need to work out and get into a healthy BMI range, which can have a, if we are into a normal BMI range, it can have a very positive impact on our pregnancy outcome. Now, once we've had a detailed evaluation, हमने history ले ली with the couple that we have facing with it, you would need a blood work, certain investigations. Now, investigations apart from the routine investigations would include an hormonal evaluation. हम आपके thyroid होगा, thyroid में the TSH is assessed, आपका thyroid stimulating hormone, the free T3, free T4, and the TPO antibodies. Now, any amount of hypothyroidism, that is the most common hormonal disturbance that is associated with recurrent pregnancy loss or recurrent abortions. So, अगर हमारा hypothyroidism होता है, that needs to be corrected with the help of medicines. If the serum prolactin level is high, now serum prolactin levels high, हमें कैसे पता चलेंगे? Now, as a if I am at home, I know whether how is my hormonal disturbances, am I expecting it? Now, you with thyroid, you will have a thyroid gland which is enlarged. You will have आपकी systemic symptoms होंगे. You will have a dry skin. You'll complain कि ma'am, I have excessive hair loss. I'm gaining weight. I cannot tolerate cold weathers. Or it is actually running in your family also. अगर आप पूछोगे my mother has thyroid पर मैम मुझे अभी तक I am not on any medicines, that is where you need to get yourself evaluated for it. Now, if the prolactin is high, you would be having a little breast discharge, white watery discharge. अगर आपने अपने breast में notice किया, at this time you go to your gynecologist, meet them, get your breast examined and get an hormonal evaluation done. Now, insulin resistance. Now, insulin resistance, a lot has been said about PCOS. Now, everybody has an opinion about it. Now, PCOS का जो main हमारा factor आता है, initially how it all starts is insulin resistance. Insulin resistance मतलब हमारी body insulin को respond नहीं कर रही है. Now, this insulin resistance can be evaluated with multiple tests like HOMA index, हमारी glucose tolerance test. So now अगर हमारी insulin resistance है, that is evaluated and corrective measures are taken in the form of lifestyle modification or medicines. The antiphospholipid antibody profile, the APLA profile, is a simple blood test which is evaluated to know अगर हमारी body में ये antibodies हैं, so that उनका corrective measures लिया जाए. Now, if I've had one abortion, I'm undergoing, like, God forbid, I've had a second abortion now. Now, how do I proceed? Now, if I know this is my second abortion, now after this, मुझे evaluation चाहिए to rule out what are the main reasons why I'm having a recurrent abortion. So it is always better कि हम अपने जो products of conception है, say for instance, we are getting it aborted surgically, तो हमारी जो pregnancy का tissue है, उसको हम further genetic testing करवा सकते हैं. मतलब genetic testing कराने के बहुत सारे हमारे पास tests available होते हैं. Simple conventional karyotype, FISH या array based CGH. Now, array based CGH जो होता है हमारा comparative hybridization, ये जो है that is the more recommended by हमारी जो international societies हैं उनमें. So this helps us know whether जो हमारा embryo था, जो हमारी pregnancy थी, whether it is a genetically normal or abnormal pregnancy, so that we can decide the further course of management. So once we've done a thorough evaluation, history हो गई है, we've gone through the blood work and everything, the anatomical factors. Now, the anatomical factors, they can be actually assessed. Now, initial evaluation अगर हम बात करें,
you think you have a recurrent pregnancy loss, आपने अपने hormonal evaluation कराया है. Now to assess your uterus, you can undergo a 3D ultrasound. A 3D ultrasound is very informative, as good as a diagnostic hysteroscopy. सिंपल अल्ट्रासाउंड की तरह होता है विद द हेल्प ऑफ अ 3D प्रोब, जो हमें एक इमेज देता है कि इफ देयर इज एनी abnormality और अनॉमली इन द यूट्रस. अगर 3D अल्ट्रासाउंड नहीं कराना है, सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी also gives us a very good information कि हमारी अंदर यूट्राइन कैविटी कैसी है. Now, if there has been एक anomaly अगर detect होती है, if there is a septum, how do we correct it? It can be easily corrected with the help of a hysteroscopy. The hysteroscopy हमने पहले भी कुछ presentations में हमने बात की हुई है. Hysteroscopy is like putting in a camera through your vagina into the uterine cavity, directly visualizing the uterine cavity. Now, if there is any problem in it, through that camera कि वहीं पे एक hole होता है where we can put in the instrument and correct. If there is any adhesions, synecdoche, they can be cut. If there is any septum, that can be removed. Polyp है, हम वो remove कर सकते हैं. At the same time, the endometrial cavity can be thoroughly assessed कि उसमें कोई हमें inflammation के दिख रहे हैं, chronic endometritis है, and accordingly, if it is chronic endometritis, we can treat you with a longer antibiotic course. Septum that can be removed. No, not all anatomical factors need correction. Now it is said कि अगर आपका hemiuterus है तो it does not need a cavity enlargement procedure. Septum है, they need removal. That is something that your fertility specialist would actually guide you personally depending upon what is the finding and what is the magnitude in your particular case. नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था कि अगर हमारा बच्चेदानी का मुंह वीक हो, दी सर्विक्स इज वीक, इट इज नॉट एबल टू होल्ड द प्रेगनेंसी. If the mouth of the uterus is weak and it is not able to hold the pregnancy, हम क्या करते हैं? We strengthen it. That is with the help of cervical encirclement. Somebody comes up and says, "Ma'am, I have a very normal pregnancy. Everything goes fine. The ultrasounds are fine, but at around 16 weeks, मुझे फर्स्ट टाइम में spontaneously baby bleeding start हो गई and my baby got expelled. Next, I came at 14 weeks, my pregnancy proceeded, and 14 weeks I had a spontaneous loss of the pregnancy by spontaneous bleeding. The ultrasound and everything was normal. So when we go ahead with an ultrasound, when the patient is not pregnant, that will help us diagnose कि हमारी cervix का status क्या है, whether it is weak or not. Now, if we suspect it is cervical enlarged, we evaluate further. And if it's confirmed it is cervical insufficiency, we can go ahead and plan cervical enlargement. Now, these stitches can be taken vaginally, laparoscopically. So the transabdominal approach, which is managed laparoscopically, can manage more difficult cases. The routine ones can be managed with the help of a vaginal approach. The endocrine factors, now we've discussed. Hypothyroidism hai, it can be corrected with the help of levothyroxine supplementation. Hyperprolactinemia hai, that can be easily corrected with the help of cabergoline. Insulin resistance hai, that can be managed with the help of lifestyle changes and हमारे metformins. Now, if there is a genetic problem, if we said, "Kyunki ma'am, I've corrected all of this, I have had recurrent abortions, now मैंने जो products of conception को check कराया, उसमें there is some genetic abnormality." Now, if there is a genetic abnormality, we would suspect कि okay, वो genetic abnormalities जो हमारे fetus में आए हैं, they can be from either of the parent or de novo. हमारे parents are absolutely normal, but it has come de novo. Now, mostly अगर जो हमारे de novo होते हैं, they are mostly in mothers having advanced age, fathers having advanced age, or they having significant smoking or uncontrolled diabetes. Same with the mothers as well. So, if we are expecting genetic abnormalities, we go ahead, evaluate the parents. Parents की genetic evaluation करने के बाद, now we go ahead with making the embryos in IVF and evaluating those particular embryos. So, जो हमारी यूरोपियन सोसाइटी है, that strongly recommends कि अगर हमारी genetic abnormality है, तो PGTA is the only option हमारे पास. Now, what is the PGTA option is? We take your eggs, we take your partner's sperms, we make an embryo. Now, we want to know whether this particular embryo is genetically healthy or not. So, we take a small biopsy from the outer cells. हम वो biopsy लेते हैं. We send it to the lab for genetic evaluation and the report comes back to us depending upon what we are expecting.
We are now, if we get the chromosome का total number, how are the numbers? If हमारे पहले हमने जो डीएनसी कराई है, पहली वाली प्रेगनेंसी में जो पर्टिकुलर abnormalities आई हैं, we can particularly rule out a single gene disease also. We rule them out. जो abnormal है, we do not go ahead with them. Those which are normal, they can be transferred, and these give us a significantly higher success rate in terms of live birth rate. Now, when we're talking about the success rate with PGTA and IVF and natural conception, now if we go literally theoretically, they say कि अगर आप naturally आप try करते रहोगे, तो eventually you will also have a genetically normal baby. You would have a healthy baby at some point of life. But we have to remember, every time a couple has a miscarriage, it has a profound impact on the physical and the emotional health of both the husband and the wife. So, this is not a decision that we take, okay, fine, because studies say that I can actually eventually have a normal baby. How much do you want to subject your body to? How much do you want to subject your mind and your emotional health to? So it is, we usually prefer taking an action after two miscarriages. Let's go ahead, let's get evaluated, let's have a baby in our arms to hold. So this genetic testing significantly helps us select a genetically normal baby, which significantly improves our pregnancy rate. So remember that even those tiny feet, they blossom, they've made a beautiful impact in this world. And you are like, you can have all the help. Do not ever give up. You're strong. You were selected for this because God thought you can go through this. And with the help, we are always there to help you out so that you can have a life healthy pregnancy and realize your dream of parenthood. Thank you. Any questions? Yes. Can bad sperms cause miscarriage? Yes, definitely. The male factor, like if these sperms have a higher DNA fragmentation index, now that can be analyzed. If the partner is obese, has excessive alcohol, excessive smoking, these can all impact the quality of the sperms. Now, whether they are good or bad, it can be evaluated further with the help of a simple test known as DNA fragmentation index. The higher the DNA fragmentation index, the higher the chances of recurrent miscarriage in a couple. What is the main cause of recurrent miscarriage? We've been through it. There is a lot number. We've discussed so many causes of miscarriage. Now, mostly it is like at times the first miscarriage, like you would say, 3 out of 10 pregnancies would eventually first pregnancies would end up in a miscarriage where there is no cause. That would be an idiopathic, where we cannot define a cause. It is only when it comes to recurrent two pregnancy losses or more that we need to evaluate further. So the major causes would be the genetic or the anatomical causes or the hormonal causes. Can I have a healthy baby after multiple miscarriages? Definitely you can. Definitely you can. Please come over and please discuss it with the fertility specialist. We need to evaluate you further, and after that, you can definitely will help you achieve your dream of parenthood. Thank you so much. For any queries, please feel free to call the Oasis Fertility Helpline. This is Dr. Poornima Mathur from Oasis Fertility, Vadodara. Thank you so much.